second derivative test. Second derivative test. So फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे था, हमें जो एफ डैश एक्स जीरो कौन सा पॉइंट में हो रहे और निकालना, और निकालने के बाद हर एक रीजन में लाइक वी दैट पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो डिवाइड्स द नंबर लाइन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, देन हर पार्ट में we have to check the sign of f dash whether it is positive or negative. Then positive से negative जा रहे हैं तो ऐसे साइन चेंज होते लेफ्ट टू राइट, ऐसे साइन चेंज होते हैं तो लोकल मैक्सिमम, नेगेटिव टे पॉजिटिव जा रहे हैं तो लोकल मिनिमम, कोई साइन चेंज नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन सेकेंडरी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. Then what is second derivative test says is like so we got the point, suppose x is equal to c is the point where the derivative is equal to 0. Then x is equal to c is a point of local maxima if two conditions. First condition तो यही है, f dash c 0 होना चाहिए, f dash c 0 होना चाहिए, and second derivative at that point, I will tell you why it is like that. Second derivative at that point should be less than 0. You don't need to take any testing point and all those things. You can directly find the second derivative. If the second derivative is less than 0, you can say that that point is a point of local maxima. If x is equal to c, is a point of local minimum if सबसे पहले तो एफ डैश से 0 होना चाहिए. सो एफ डैश से 0 है तो उसी पॉइंट में लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं, नहीं तो लोकल मिनिमम हो सकते हैं. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, एफ डैश इज इक्वल टू 0 एंड एफ double dash c second derivative is greater than 0. Then the test fails if f dash c is equal to 0 and second derivative at that particular point, that also if you got 0 then the test fails. Then if the test fails, then test fail हो गया तो then you have to use the first derivative test. Okay. So this is the second derivative test. So what is the second derivative test says? In the first derivative test, what we did is first सबसे पहले हमने जो पॉइंट में f dash x 0 है करके निकाला, that पॉइंट में लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं, लोकल मिनिमम हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी हो सकते था. देन हमने क्या किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक पॉइंट लेफ्ट साइड से एक पॉइंट लिया, राइट साइड में एक टेक्स्टिंग पॉइंट लिया, देन साइन चेक किया f dash x का डेरिवेटिव का. If the sign changes from positive to negative, then it is local maximum. Negative to positive is local minimum. And कोई sign से नहीं है तो point of inflection. So second derivative test में थोड़ा और easy है. Second derivative, first derivative निकालने के बाद point मिलेगा जो f dash x is equal to 0. So जो point मिलेगा, then find the second derivative. उस पॉइंट में सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो उस पॉइंट में सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो उस पॉइंट में सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो दैट पॉइंट विल बी लोकल मैक्सिमम. सेकंड डेरिवेटिव इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमम. इसका प्रूफ और आपको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं. जस्ट टेल यू द लॉजिक, आई विल टेल यू द लॉजिक. देखो, दिस इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट, राइट? दिस इज द
local, this is a local maximum point, local maximum point. Now, look at that. So this slope of the tangent, we'll look at the tangents. Look at this tangents. जो local maximum में जो tangents draw किया था, the tangents will have slope, positive slope here, right? Isn't it? Can you see? All the Yes, sir. tangents are moving up. But look at that slope अब ऊपर 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 जा रहे, slope कैसे हो रहे? Slope decrease हो रहे हैं क्या? Slope increase हो रहे हैं क्या? Decrease हो रहे ना? Decrease. Decrease हो रहे. हाँ. Slope decrease हो रहे. So that means slope is a decreasing function. Slope is a decreasing function. So कोई भी function decreasing function उसका derivative इधर already our function is now slope f dash x. This is a slope function f dash x. Slope function. I am talking about that function now. I'm not talking about the original function. And here you can see that when in the local maximum area, you can see that the slopes of this function is decreasing. So when a function is decreasing, its derivative less than 0, that means slope function, it is decreasing here. So उसका मतलब उसका derivative मतलब f dash x, f double dash x, it should be less than 0. That is why this logic here. F double dash c at that particular point, second derivative less than 0 है तो that point is a local maximum. राइट साइड में भी है तो सेम, जैसे लोकल मैक्सिमम का आपको राइट साइड में ऐसे, देन राइट साइड में कैसे होगा? राइट साइड में भी ऐसे ही होगा. यू कैन सी दैट हियर आप देखेंगे तो इधर भी स्लोप, आप नीचे नीचे आते हैं तो स्लोप आपको ऐसा लगेगा कि इंक्रीज होके आ रहे, है ना? स्लोप बढ़ते आ रहे, बट यू कैन सी दैट इट इज लाइन इज फॉलिंग डाउन, लाइन इज फॉलिंग डाउन. जब फॉलिंग डाउन है तो स्लोप नेगेटिव होगा, सो स्लोप नेगेटिव होगा. सो मे बी नीचे -5 स्लोप होगा, ऊपर आने के टाइम -1 स्लोप होगा. So actually which is bigger number? -1 is bigger, right? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इधर एग्जाम्पल सपोज इधर स्लोप में भी -5 होगा. Okay, either so -1. So you can see that is when it is moving down, this slope function is -1. This is moving down. You can see that the slope is decreasing, -1, -2, ऐसे -5 ऐसे जाएगा. So in the case of local maximum case, you can see that the slope function is decreasing. So that is why slope कोई भी function decreasing है तो उसका derivative less than 0. That is why second derivative less than 0. Derivative का derivative less than 0. That is why the logic here. उसका proof हमारा textbook में बताया नहीं. Same logic can be applied for local. So just see one local minimum point. This is local minimum point. Local minimum point. Look at the tangents. You can see that tangents are increasing. Slope of the tangents are increasing. You can see that.
slope of the tangent is increasing, that means f dash x is increasing, slope is increasing, because when you're moving up, you can see that the line becomes more vertical. The slope is increasing. That means f double dash x. Increasing मतलब उसका derivative positive. So f dash x का derivative f double dash x. That is positive. That is the logic behind that. So इतना keep this thing in your mind. Second derivative test यही बोल रहे हैं कि once you get the local maximum or local minimum, for checking whether it is a local maximum or local minimum, you have one more option now. Just find the second derivative at that point. If the second derivative is less than 0, negative है तो local maximum. Second derivative greater than 0 है तो local minimum. Okay. But second derivative is equal to 0 mila. Then that means you cannot find any conclusion. That means the test fails. Then there is no other option. You have to use the first derivative test itself. Okay. This is one of the questions that we did yesterday. Okay. So can you see the screen? Can you see the screen? Yes, sir. Yeah. So I'm going to use the second derivative test here. See, second derivative test. दोनों एक साथ अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, बट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑलरेडी हमने ये तो आधा करके रखा था, मीन्स पूरा करके रखा था, सो दैट विल बी easy to do here. So you got the points. The points are, आपको जो points मिला है, x is equal to 0, 1, -2. And आपको f dash x मिला था, f dash x मिला था 12x cube plus 12, okay, नहीं तो 12 कॉमन, 12 कॉमन, x cube plus x square minus 24. This is what you got as f dash x. Now you have to find f double dash x. So 12 is constant common, 24 नहीं है, it is 2 क्योंकि already 12 common है, x cube plus x square minus 2x, correct? 12 into x cube plus x square minus 2x. Now f double dash x, it is 3x square plus 2x minus 2. 3x, 12 into 3x square plus 2x minus 2. अभी हमें चेक करना है 0, 1, -2 में लोकल मैक्सिमम है क्या, लोकल मिनिमम है क्या. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज यू जस्ट फाइंड f dash f double dash 0, 0 में पॉइंट निकालना. सो इट इज 12 into 0 plus 0 minus 2 which is equal to minus 24. So less than 0, less than 0 है तो मैंने आपको बताया था less than 0 है तो that point is a local maximum point. That point is 24 is not the maximum value, minus 24 is not the maximum, it is just the sign, like f double dash 0, second derivative at that point, if it is negative then that point is local maximum point. So हमने कल already first derivative test use करके check किया था, इधर हमें मिला था x is equal to 0 में local maximum है, and for finding that local maximum value you have to substitute that x is equal to 0 in the original function, you have to find the value. Now f double dash 1 में check करेंगे, f double dash 1, second derivative at 1.
So 12 into 3 plus 2 minus 2. So 2 minus 2 0 हो जाएगा. So 12 into 3, 36. So 36 is greater than 0. That means it is local minimum. It is local minimum. That is what here yesterday we got x is equal to, it is a local minimum. And then f double dash minus 2 में क्या है चेक कर देना. 12 into minus 2 का स्क्वायर 4 into 3 12 minus 2 का स्क्वायर 4 into 3 12 plus 2 into minus 2 minus 4 minus 2. So 12 minus 6 into 12, anyway it is positive. This is positive. That implies even you don't need to find that value. We know that 12 minus 6 is 6 into 12. Positive into positive is positive. That means it is local minimum. Understood? So this is the second derivative test. And this is one of the most useful test. क्योंकि इधर ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 ऐसे पॉइंट्स निकाल के दो साइड में टेस्टिंग करने का कोई जरूरत नहीं. डायरेक्ट आप कर सकते हैं. डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव निकालो. डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव निकाल के सेकंड डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट लेस देन 0 है तो नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमम. बट इफ द सेकंड डेरिवेटिव इज 0 then the test fails. Then you have to go back to the first derivative test. Okay. Now I want to tell you another important point. F dash x or f dash c is equal to 0. Derivative is equal to 0 at a particular point. इसका मीनिंग क्या क्या हो सकते? एक मीनिंग तो ऐसे हो सकते कि f of x is a constant function, right? f of x is a constant function, isn't it? Constant तो डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा. Then second, so the first one is not that much important because it is a constant function, the derivative is 0. But हम हमेशा constant function के बारे में नहीं discuss कर रहे. Constant function मतलब graph is always a straight line, y is equal to 5, so horizontal line. But we are normally discussing about non-constant functions. So f dash x at a point 0 मतलब that x is equal to c, that point may be a local मैक्सिमम, क्योंकि लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं. x is equal to c may be a लोकल मिनिमम हो सकते हैं, क्योंकि लोकल मैक्सिमम तो हमने देखा था डेरिवेटिव 0, लोकल मिनिमम होता भी डेरिवेटिव 0. एंड वन मोर हमने देखा था x is equal to c may be a point of inflection. The star meaning, 4 meanings are there. When at a particular point derivative is equal to 0 matlab, the सबसे first thing is f of x. If f of x is a constant function, the derivative is 0 always. But ये तीन सबसे important. That point, the 3 options, local maximum हो सकते हैं, local minimum हो सकते हैं, and point of inflection हो सकते हैं. So ये तीनों हमने ग्राफ में भी देखा था. Point of inflection मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ओनली कॉन्केविटी चेंज होगा.
हमने 2-3 क्वेश्चन में वो देखा था, ग्राफ भी दिखाया था. So only concavity will change. Okay. Now, so this should be very clear. This should be in your mind. Then another concept है critical points. Critical points मतलब critical points are the points. They are the points where derivative is equal to 0 or undefined or not defined. जैसे that means f dash x is equal to 0 or f dash x is derivative not defined. That kind of points. That kind of points are known as critical points. Okay, so that point also you should keep in mind. Okay. So derivative undefined मतलब for example जैसे f of x is equal to 1 by x. So derivative is equal to minus 1 by x square. So here at x is equal to 0, f dash x is undefined. Okay, that is the meaning. If a derivative undefined, this is the meaning, undefined. So derivative is equal to 0 मतलब आपको पता है जैसे f of x is equal to x cube minus 2x. So f dash x is equal to 3x square minus 2. So f dash x is equal to 0 implies 3x square minus 2 is equal to 0. That means 3x square is equal to 2. X square is equal to 2 by 3. X is equal to plus or minus 2 by 3. So आपको 2 points मिलेगा where derivative is equal to 0. So these particular points, when derivative is equal to 0 or derivative is undefined, these types of points are known as, they are having a particular name, they are known as critical points. And this is most important, derivative is equal to 0 matlab there are mainly 3 options or mainly 3 chances. That point may be a local maximum, that point may be a local minimum, or that point may be a point of inflection. Now, we will go to some of the most important topic. We'll start with a very small problem today. Find two numbers whose sum is 24, and whose product is as large as possible. So we are going to do, so these kind of questions will come for 6 marks, but this is very simple question, not this one, but this type of question. Okay, so we have to find two numbers whose sum is 24. So you can take the numbers. Let the numbers are
let numbers is equal to x comma 24 minus x. So you can take x comma y also. See, if you take x comma y, what will happen is product is x into y. Then there will be two variables. So to avoid that thing, what we will do is we will use only one variable. So सबसे पहले इसी टाइप क्वेश्चन का स्टेप कैसे है कि you have to find a formula for the thing which is to be maximized or minimized. That is the first step. जो भी चीज हमें मैक्सिमाइज करना है, नहीं तो जो भी चीज हमें मिनिमाइज करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है आपको सबसे पहले. सो इधर आपको जो मैक्सिमाइज करना था प्रोडक्ट, नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एज लार्ज एज पॉसिबल. सो नंबर्स का प्रोडक्ट के लिए एक फॉर्मूला बनाना. सो द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स is equal to x into 24 minus x. So you can say this is minus x into minus x square plus 24x. So कभी कभी क्या होते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर एक ही वेरिएबल में है. If the formula that you made, if the formula is in more than one variable, एक वेरिएबल से ज्यादा उस फॉर्मूला में है, तो make it into one variable using the given फैक्ट. जो भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया वाला होगा, उस इंफॉर्मेशन यूज करके उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. दैट इज द सेकंड स्टेप. बट इधर हाई से कहीं कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, इट्स ऑलरेडी इन सिंगल वेरिएबल. सो फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, द फर्स्ट स्टेप इज you have to find, this is the formula, this is the basic steps we will follow for all these kind of problems. So once you understand that main thing, the rest is easy. So first step is you have to find a formula for the thing which is to be maximized or minimized. इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैक्सिमाइज करने के लिए, कुछ ना कुछ मिनिमाइज करने के लिए बोला होगा. ठीक है, तो उसको उसके लिए एक फॉर्मूला बना देना. देन कभी उसमें से एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल होगा. सो ऐसे कुछ है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, उस इंफॉर्मेशन यूज करके उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना. सो इधर है तो कोई जरूरत नहीं, इधर एक ही वेरिएबल में है. दैट मीन्स आपको p प्रोडक्ट, जैसे यू कैन गिव एनी नंबर, p ऑफ x नहीं है तो a ऑफ x, वॉट एवर इट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24x. The time will finish now, but I have to finish this question. We'll do one thing. We'll start the meeting again for some 5 minutes. Okay. Hello. Yes, sir. Yeah, we will start the meeting for just for 5 minutes. Yes. Okay. Once this this is stopped, then we will start it again for 5 minutes, and I want to finish this.